Hello friends, hope you all are fine and doing well. Stay home, stay safe. So in continuation of our discussion on drugs acting on ANS, autonomic nervous system. In last lecture we discussed about the drugs acting on parasympathetic nervous system, that is parasympathomimetics and parasympatholytics. Today we'll discuss the drugs acting on sympathetic system, that is sympathomimetics. So we know that sympathetic system prepare our body for fight or flight response, and parasympathetic rest and digest, rest, repair and renew. So what are the sympathomimetic drugs? Drugs that partially or completely mimic the actions of norepinephrine or epinephrine. Simply the drugs which produces the effects as same as sympathetic system, है ना. जो ड्रग सिंपैथेटिक सिस्टम के जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं हम सिंपैथोमाइमेटिक्स. यानी जो ड्रग्स एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, दैट इज एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं हम सिंपैथोमाइमेटिक्स. अब इनके क्या इफेक्ट है, सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या इफेक्ट है? सो दीज आर दी नॉर्मल सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेस, है ना. जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है उनके ये इफेक्ट है. We know that the thoracolumbar outflow and craniosacral outflow of sympathetic and parasympathetic system. So from spinal cord and ganglion. So eye, it causes the dilation of pupil. On lungs, it causes the dilation of bronchioles. So bronchodilation, mydriasis. On heart, increased heart rate, that is positive ionotropic and positive chronotropic effect. On blood vessel, it causes the constriction. Okay, alpha receptor का अलग इफेक्ट रहेगा, बीटा रिसेप्टर का अलग इफेक्ट रहेगा. On stomach relaxation, that is gastrointestinal relaxation. Then bladder को भी रिलैक्स करेगा, यूटेरस को भी रिलैक्स करेगा. So those are the sympathetic responses. So in sympathetic system, the main neurotransmitter is the adrenaline, है ना, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन. जैसा आपके एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक में मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके अंदर है एड्रेनालिन, उसे नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन भी कहते हैं. So all catecholamines पूछता है ये सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड अपटेक ऑफ adrenaline or noradrenaline. So all catecholamines are synthesized from the amino acid, that is phenylalanine in liver, then hydrolyzed to the tyrosine at the end of nerve. So methylation of noradrenaline are synthesized. अगर methylation करेंगे noradrenaline का methylation होता है जिसकी वजह से क्या बनता है, adrenaline बनता है. So tyrosine hydroxylase is rate limiting enzyme and it is inhibited from me-tyrosine. So storage, noradrenaline stored in synaptic vesicle or granules within the synaptic nerve ending. On methylation of cytoplasm, norepinephrine converted into the adrenaline in adrenal medulla. So see here, this is the phenylalanine converted to tyrosine with the help of enzyme hydroxylase. Then it converted to with the help of enzyme tyrosine hydroxylase into DOPA. What is DOPA? DOPA is also known as डाइहाइड्रोक्सीफिनिलएलानिन, है ना. डोपा क्या है, डाइहाइड्रोक्सीफिनिलएलानिन. दिस डाइहाइड्रोक्सीफिनिलएलानिन कन्वर्टेड टू द डोपामिन विद द एंजाइम decarboxylase. This beta hydroxylase convert to the noradrenaline. Now this noradrenaline with the enzyme methyltransferase converted to the adrenaline. So after synthesis it is released by nerve impulses and indirectly by the amine pumps. So uptake by CS. So axonal uptake and granular uptake. Those are the two mechanisms of reuptake of the catecholamines. This is metabolism. So monoamino oxidase MAO and catechol O methyltransferase. Those are the two enzymes which causes the metabolism of this adrenaline and noradrenaline, which get converted to the VMA, vanillyl mandelic acid. So this is the simple synthesis, storage, release and uptake of adrenaline and noradrenaline, है ना. The enzymes rate limits enzymes है, so याद रखो, है ना. Those are the enzymes which are responsible for conversion at the different steps. So the major role in termination of action is played by the axonal uptake, है ना. जो axonal uptake होता है उसकी वजह से जो मेन है termination होता है action का adrenaline और noradrenaline का. So where are the adrenaline receptors are present? So those are the receptors alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 and beta 3 receptors. This is the location of the receptors, and alpha 2 CNS, heart, lungs, adipose tissues, and those are the location of these receptors. So these are the receptor subtypes. Those are the agonist, and sympathomimetics agonist. Those are the antagonist. So alpha
1A अल्फा 1B अल्फा 2A अल्फा 2B beta 1 beta 2 beta 3 dopamine 1 dopamine 2 receptors and those are the agonist है ना oxymetazoline terpidolene this is the research compound those are the drugs those are the antagonist याद रखो atenolol S-butyl ये क्या है antagonist है the sympathomimetics are classified like this classification is based on mechanism of action direct acting agonist epinephrine norepinephrine indirect acting agonist amphetamine cocaine mixed action epinephrine एंड स्यूडोएफेड्रिन मिक्स एक्शन मतलब क्या कि वो रिएप्टेक भी करेगा और रिलीज भी करेगा सो देखो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स एनहांसेस रिलीज ऑफ नॉरपिनेफ्रिन फ्रॉम वेसिकल मिक्स्ड एक्शन ड्रग्स एक्ट्स बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यहां पर भी एक्ट करेगा और इस स्टेप भी ड्रग्स डायरेक्टली एक्टिवेट द रिसेप्टर तो ये क्या करेंगे मिक्स एक्टिंग रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करेंगे और यहां पर वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर का भी रिलीज करेंगे सो दैट आर द मिक्स्ड एक्शन. So this is the classification of sympathomimetics, also known as the adrenergic agonist. Adrenergic agonist. So there are several synonyms, है ना adrenergic, sympathomimetics, adrenomimetics, adrenergic receptor agonist, है ना सब सेम है. So direct acting, mixed acting, indirect acting. Direct acting के अंदर selective है तो selective receptor के ऊपर एक्ट करेगा alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. नॉन सेलेक्टिव के ऊपर ये किसी भी रिसेप्टर पर एक्ट कर सकता है अल्फा 1 अल्फा 2 यानी 2-3 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रहा है इसलिए इसको नॉन सेलेक्टिव ये एक ही किसी रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव है ना फेनिलेफ्रिन क्लोनिडीन दोस आर द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड नॉन सेलेक्टिव है ना एसोप्रेनालिन फेनिफ्रिन सो मिक्स्ड एक्टिंग इफेड्रिन है ना अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 एंड रिलीजिंग एजेंट ये मिक्स्ड एक्टिंग है. इनडायरेक्ट एक्टिंग जो इनडायरेक्टली प्रोड्यूस करता है सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट रिलीजिंग एजेंट्स एम्फेटामाइन जो रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर को टेरामिन अपटेक इनहिबिटर कोकेन है ना जो रिएप्टेक को इनहिबिट करेंगे एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन का माओ इनहिबिटर्स है ना जो उसका डिग्रेडेशन नहीं होने देंगे कैटेकोलामाइंस का सिलेजिलिन देन सीओएमपी इनहिबिटर एंटाकेपोन. नाउ दिस इज द थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स है ना प्रेशर एजेंट्स जो वैसोप्रेशर करते हैं ना सो नॉरएड्रेनलिन एफेड्रिन डोपामिन कार्डियक स्टिमुलेंट्स एड्रेनलिन एसोप्रेनालिन ब्रोंकियोडायलेटर्स है ना साल्ब्यूटामॉल इंपॉर्टेंट ड्रग है नेजल डिकंजेस्टेंट फेनिलेफ्रिन ज़ैलोमेटाज़ोलिन है ना ऑक्सीमेटाज़ोलिन दस आर द नेजल डिकंजेस्टेंट है. कई बार देखा होगा आपने जो इंस्टिल करते हैं नोज में है ना जो ड्रॉप्स मिलते हैं है ना जो लोकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं टॉपिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर ऑक्सीमेटाज़ोलिन होता है ना वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट दस आर द सीएनएस स्टिमुलेंट्स एम्फेटामाइन एनोरेक्टिक्स है ना व्हाट इज एनोरेक्सिया लैक ऑफ और लॉस ऑफ एपेटाइट भूख नहीं लगने देते हैं है ना ओबेसिटी वगैरह लोग हैं तो उसका मिसयूज करते हैं अब्यूज करते हैं है ना एम्फेटामिन का भी वही इफेक्ट है. देन यूटेरिन रिलैक्सेंट एंड वैसोडायलेटर्स साल्ब्यूटामॉल टर्बिटोलिन है ना दस आर द ड्रग्स. Now what are the pharmacological action of these sympathomimetic drugs? So in periphery adrenaline acts on both alpha and beta receptor on different tissues and organs. So on heart it causes the positive chronotropic, positive inotropic, positive dromotropic. Dromotropic क्या है? Increase in conduction velocity, speed बढ़ा जाता है conduction का. So heart rate बढ़ा जाता है और force of contraction बढ़ा जाता है और conduction speed बढ़ा जाता है on heart. On blood vessel, vasoconstrictor alpha 1 के ऊपर एक्ट करेगा तो vasoconstrictor है as well as vasodilator when acts on the beta 2 receptor depends on the action on drugs. Action is most marked on the arteriole due to the alpha 1 and larger arteries and veins due to the beta 2 receptors. Action on उस phenomena क्या कहते हैं Dell's vasomotor reversal phenomena. Vasomotor reversal Dell's ये साइंटिस्ट का नाम है Dell's vasomotor reversal phenomena. क्यों? क्योंकि intravenous injection of adrenaline normalin causes the increase in blood pressure due to the alpha 1 effect and followed by the prolonged fall of blood pressure due to the beta 2 effect. So it is administered after giving alpha blockers. Only fall in blood pressure is seen. क्योंकि यहाँ पर अल्फा 1 ब्लॉक कर दिए तो यहाँ पर क्या होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा वासोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा ड्यू टू द बीटा 2 इफेक्ट ओनली द फॉल इन ब्लड प्रेशर वैसोडाइलेशन होगा. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज डेल्स वासोमीटर रिवर्सल फेनोमेना. ये पूछते हैं अच्छे से याद करो इसको. सो दिस बट इट कॉजेज द ब्रैडीकार्डिया आल्सो है ना एड्रेनलिन कॉजेज द टैकीकार्डिया. रेस्पिरेटरी सिस्टम एड्रेनलिन एंड एसोप्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनलिन एक्ट्स ऑन बीटा 2 रिसेप्टर एंड कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ dilation of bronchial smooth muscles है ना. so reduce the secretion release mucosal congestion by vasoconstriction है ना. so ये broncho dilation करते हैं और mucosal जो
सिक्रेशन होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। आई के ऊपर कॉज द मैट्रेटिक इफेक्ट, जीआईटी गट रिलैक्सेशन, ब्लैडर डेट्रासेलुलर रिलैक्स, यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन थ्रू अल्फा रिसेप्टर्स व्हाइल रिलैक्सेशन थ्रू बीटा रिसेप्टर, skeletal muscle contraction of muscles, tension developed in muscle fibers which may cause tremor mediated by the beta receptors. On CNS there are no any marked effects on CNS, थोड़े बहुत इफेक्ट यहाँ मिलते हैं अल्फा रिसेप्टर की वजह से। मेटाबॉलिक इफेक्ट, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग द साइक्लिक एएमपी इन लिवर सेल एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना। ग्लैंड्स डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, so causes the hyperglycemia, significant hyperglycemic effect, increased glycogenolysis in liver, beta 2 effect है, increased release of glucagon, beta 2 effect and increase of insulin alpha 2 effect. Lipolysis करते हैं, agonist activity on the beta 3 receptor of adipose tissue. So what is pharmacokinetic? Adrenaline या जो catecholamines है, they are not given by oral route because COMT and MAO, है ना, ये क्या करते हैं उसका मेटाबोलाइज करते थे। Absorption is more rapid जब इंट्रामस्कुलर देते हैं तो कैटेकोलामाइन does not cross the triple B, जनरली ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करता। These are the adverse effect of adrenaline or sympathomatic drugs, restlessness, palpitation, tremor, anxiety, tachycardia, blood pressure increases, etc. These are the therapeutic uses: anaphylactic shock, bronchospasm, cardiac arrest, then with local anesthetics to control the epistaxis. Those are the adverse effect: hemorrhage, cardiac arrhythmias. Those are the contraindications, यहाँ पर नहीं देंगे इसको hyperthyroidism में और diabetes में। Those are the interactions with different drugs. So you can remember the indications of adrenaline or the sympathomimetic drugs like A, B, C, D, E, F, G, H, like anaphylaxis, bronchial asthma, cardiac arrest, dental extraction, epistaxis for prolongation of local anesthetic action, glaucoma, hypoglycemia, है ना। Anaphylaxis क्या होता है? Anaphylaxis it is a hypersensitivity reaction characterized by the hypotension and breathlessness, but anaphylaxis is induced by the histamine. So adrenaline acts as a physiological antagonist of histamine. So adrenaline, by increasing the blood pressure and by dilation of bronchi, reverse these symptoms. It also acts on mast cells, which reduces the release of allergic mediators. So adrenaline causes the bronchodilation, therefore it is used in the bronchial asthma. So in cardiac arrest, which stimulates the heart, adrenaline stimulates the heart, which is given intravenously. डेंटल एक्सट्रैक्शन इट कॉन्स्ट्रिक्ट द लोकल ब्लड वेसल, है ना, ये क्या करता है लोकल ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, व्हिच रिड्यूसेस द ब्लीडिंग, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द डेंटल एक्सट्रैक्शन। एपिस्टैक्सिस जो ब्लीडिंग होता है ना, सो ट्रीटमेंट कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, नो ड्रग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द एपिस्टैक्सिस, बट लोकल एप्लीकेशन ऑफ एड्रेनालिन इज यूज्ड टू अनकंट्रोल्ड एपिस्टैक्सिस। इन डेंटल एक्सट्रैक्शन एज आई टोल्ड यू एपिस्टैक्सिस, सो प्रोलॉन्गेशन ऑफ local anesthetic action, as I told you, it constricts the blood vessel at the site and reduces the absorption of local anesthetic agent in the blood. So it keeps the anesthetic agent at the site and duration of anesthesia is prolonged. So therefore it is given with the local anesthetic agents. Glaucoma, so adrenaline mediated the vasoconstriction, which reduces the blood pressure or blood flow to the eye and reduces the formation of aqueous humor, which in turn reduces the intraocular pressure. ठीक है, लेकिन इसको नैरो एंगल ग्लाइकोमा में नहीं देते। हाइपोग्लाइसेमिया क्यों? क्योंकि एड्रेनालिन बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बाय इंक्रीजिंग द ग्लूकागॉन एंड बाय रिड्यूसिंग द इंसुलिन कैन इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द हाइपोग्लाइसेमिया. So these are the silent features of some adrenergic drugs. Dopamine is used in the patient with cardiogenic shock, that is congestive heart failure. Dobutamine is used as an inotropic agent in congestive cardiac failure also. Ephedrine can be used for the variety of purposes. बहुत सारे इसके इफेक्ट है, ब्रोंकियल अस्थमा है, स्पाइनल एनेस्थेसिया टाइम यूज करते हैं, पोस्टरल हाइपोटेंशन. Amphetamine stimulates the respiratory center, especially if it is has been depressed. So hunger is also suppressed as a result of inhibition of hypothalamic feeding centers. They also have weak anticonvulsant, analgesic and anti-emetic action. So amphetamine are drug of abuse and are capable of producing the marked psychological but little or no physical dependence. ठीक है. Amphetamine may cause the mental confusion, delirium, hallucination and acute psychotic stress. तो ये क्लोरप्रोमाजिन देते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए. This is phenylephrine, methoxamine. So it is all about your sympathomimetic agents. Please go through it or memorize the classification, therapeutic uses and pharmacological action of the drugs. Thank you.